तो सिक्का बहुत बीमार हो गई है क्या? बात तो ठीक है तेरी। टीचिंग का एक फायदा मुझे मिला, बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार की पर्सनालिटियों से मिलने की सौभाग्य प्राप्त हो। फायदा होता है टीचिंग, और ये सबसे बेहतरीन मतलब सबसे ज्यादा फायदा होगा वो 11th-12th की टीचिंग, क्योंकि जो बिहेवियर होता है ह्यूमन वो बचपन से उतना डेवलप नहीं होता है और धीरे धीरे ग्रो करता है, और 12th के बाद उनके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी होती है, उसको छुपा भी ले जाते हैं, अपनी कमियों को आदमी फिर छुपा भी सकता है। और ये जो 11th-12th रिपीट 2-3 साल होता है ना, इसमें वो मतलब वो एडोलसेंट होते हैं, ये जो किसी को छुपा नहीं पाते, कोशिश करते हैं तो वो ह्यूमन बिहेवियर मतलब लाइक तो आप यहाँ पे कहाँ तक पहुँचे थे बताएगा कौन? सिंपल पेंडुलम हो गया था। कॉलेज की फीस ज्यादा नहीं तो पढ़ मेहनत तो मिल जाएगा। यार तुम अरिया से ज्यादा कैसे जो नंबर लाते थे, मार्क्स अरिया से कम लाए, तुम्हारे पड़ोसी ने निकल लग गया और सोलमपुर साई चैनल नहीं होगी तो आगे बोल जाओ सिया शीट आई होगी यार ऐसे चलते आई गाड़ी से गाड़ी जब उस पर रखी किताब दिए थे ना, तो तुमने कहीं पे रखा था शायद, तो अगले दिन तो मिल गई, उसके अगले दिन जब तुमने रखी थी लोगों ने पता नहीं कहाँ इधर से कर ये बोलते पता नहीं, जब कोई बोलता है मुझे पता नहीं किस समय तो मिले क्या होता है हमारा तो कुछ गलती है, लेकिन इन लोगों ने उस किताब की गैबिज कर दी।
पर सीरीज पैरेलल कर लिया था ना, सीरीज पैरेलल करने नहीं किया था ना, देखो क्वेश्चन पहले की find the time period of a particle of mass m whose potential energy is equal to, whose potential energy is given as u is equal to u naught 1 minus cos of cx, whose potential energy साल का लेना, पिछले साल के जैसा पेपर आता है तब के लिए ये अच्छा सवाल है। whose potential energy is equal to u naught 1 minus cos of cx, where u naught and c are constant, where u naught and c are constant, u naught and c are constant. Find the period of, पहले लिखिए, find the time period। तो आपको इसका पोटेंशियल एनर्जी बच्चों दिया हुआ है और इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो ये जेई एडवांस और नीट दोनों के लिए बहुत बढ़िया सवाल है। तो वही देखो, कौन लिखा कल कुछ कम किया देखो, जाओ वहां से सानिया पढ़ाई कितने घंटे हो रही है, कितने घंटे पढ़ाई कर रही है? 4 7 से 8 क्वेश्चन सब कर ले रही हो, कितने क्वेश्चन कर रही हो और करो। चिन्मयी कितने घंटे पढ़ रही हो? 5। कितने क्वेश्चन कर रही हो? रिवाइज करती है ना, और फॉर्म भर दो उसका, ठीक है ना। सुधर जाए आपको आज तो ठीक है करारे रोज 100 सवाल करके दिखाओगी जैसे कल दिखाई, नहीं तो कान खींच लिया जाए। आया क्या आया? कितना टाइम हो रहा है?
चलो देखो बेटा, कल 9 से 10:30 बताया था क्लास में। आया किसी का? निकालो, बाहर नहीं हो गया, आवाज नहीं सुन रहा है। हाँ? सही, मेरे को तुम्हारा आया? ये रंगी जम रहा है। चलो, चिंता नहीं है। सबसे पहले ये देखिए, देखो प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ये होता है, देखो इधर ध्यान से। आपकी जैसे मतलब प्रॉब्लम ये है कि आप में से ज्यादातर बच्चे नहीं पढ़ने वाले हो, तो प्रोसेस एक सुझाव बताओ मुझे जरा सा, कि अगर तुम्हें कोई भी नया क्वेश्चन फ्रेम करके देता है और उसमें टाइम पीरियड निकालना है, तो सबसे पहले तुम्हारा क्या रहेगा प्रोसेस? थोड़ा पास बोलो, आवाज अच्छी हो। उससे क्या करेंगे? हाँ जी, अच्छा, ये प्रोसेस ऐसे चल। यही तो प्रॉब्लम है। मेरे अंदर क्या प्रोसेस करेंगे सबसे पहले? ओमेगा निकाले, तो ओमेगा मतलब जो सबसे पहले तुम ये मुझे बताओ, व्हाट इज द कंडीशन फॉर एसएचएम? लंजे व्हाट इज कंडीशन टू बी क्वेश्चन पीरियोडिक और परफॉर्मिंग एसएचएम? बोलो बेटा, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ब्रैकेट। सानिया बताओ मुझे। कराटे बता दो। नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट, ये पहले को ये भी बता देगी कि फोन छोड़ दे तो इसका जीएमसी लग जाए। बैठो, acceleration is directly proportional to minus of displacement। बोलो लाइट हो क्यों?
अभी 2 बजे लेके आना, सुनाई दिया? हाँ, लिखूंगा मैं। तो A is directly proportional to minus of displacement, ठीक है? तब आपका सबसे पहला एम क्या होना चाहिए? You find it. पहला, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, तो उसको कैसे प्रोसेस करो? आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए टू फाइंड द एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स। क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स। तो दिमाग में पहले मैपिंग करो प्रोसेस की। प्रोसेस क्या है? अगर आपको कोई ये क्वेश्चन कुछ नहीं, कंडीशन दे दिया है कि भाई ये कंडीशन है, इसमें आप मैग्नीट्यूड निकालो। तो इसमें आपको क्या करना है भाई साहब? इसमें आपने क्या करना है कि आपको सबसे पहले फोर्स निकालना है। अब फोर्स यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन हो सकता है किसी और तरीके से निकले, किसी दूसरे क्वेश्चन में किसी और तरीके से निकले। तो आपका फर्स्ट क्या करेंगे? आप फोर्स को निकालेंगे, और फोर्स निकालने के बाद एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और फिर उससे कंपेयर करेंगे किससे? एसएचएम की जो कंडीशन। ये जब नए प्रॉब्लम आते हैं या जब कंडीशनल प्रॉब्लम आते हैं, देखो उसने कर लिया बोल कर, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि वेरी क्लियर, अगर आप सिर्फ बायोलॉजी स्टाइल में मतलब आपके कई सारे पेरेंट्स आते हैं बायो नंबर में, बायो यू कैन कंपेयर बायो विद फिजिक्स। Even if you are scoring 360 out of 360, you will not get the C until unless you are good in physics and chemistry. So, ये और getting 360 in biology is a cup of tea. Even idiot students can get it. But getting 100 marks in physics, मतलब it means you have some analytical ability. You have studied actually. To see. U is equal to U naught 1 minus cos Cx we have given. And we know that the relation between potential energy and force is F is equal to minus du by dx. So we can find the force by using this concept. So just find the force. So U naught we can write as d by dx of 1, and then we can write as d by dx of cos of Cx. So 1 is a constant, so constant differentiation would be 0. So F is equal to U naught, negative sign we can take outside, and d by dx of cos Cx. So d by dx of cos Cx is d by dx of cos Cx, d by dx of cos Cx, बोलिए, minus sin Cx. So minus minus plus C sin of Cx. Any problem? So force is equal to minus U dot C sin of Cx. Point is clear or not? अब ये किसका इक्वेशन हो गया आपका? फोर्स का। अब आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो अब आप ये चीज देखिए कि क्या उसमें मास दिया है? Yes, mass m is given. So acceleration would be F upon m. So A is equal to U naught C sin Cx by m is the negative sign. But see, in question they have mentioned that for small oscillation. So they have mentioned the word small oscillation. So for small oscillation, अब देखो छोटे-छोटे word का meaning है इस question में. Small oscillation means if it is a pendulum, so it is going for small theta, and if it is a small theta, then sin theta can be written as theta. So sin Cx can be written as minus U naught C Cx by m. So A can be written as minus U naught C square by m into x. Got it? So now we know the condition for SHM, and that is nothing but A is equal to minus omega square x. So this is equation 1, this is the 2. Comparing 1 and 2, we can write as U naught C square by m. So omega is equal to under root U naught C square by m
but we need to find the time period. So omega is equal to 2 pi by d under root u naught c square by m. So time period will be 2 pi under root m upon u naught c square. Point is clear or no? फिर से देख लीजिए, आपको क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? They have given you the potential energy versus position expressions. So first you need to find the force. So what we need to do to find the force? We need to differentiate it. And we know the relation F is equal to minus du by dx. So after differentiating, we know that 1 is a constant. So constant differentiation would be 0 d by dx of cos cx. C will come outside and c is representing constant. So d by dx of cos cx is a minus sin cx. So minus multiplication will be plus. So we can write it as a c sin cx, and then we have a minus u naught. So F is equal to minus u naught c sin cx. And we know that the A is equal to F by m. So A would be minus u naught c sin cx by m. As it is clearly mentioned in the questions that it is for small oscillation. So for small oscillation, theta would be very small. Then we can write sin theta is equal to theta. So sin cx can be written as cx. So after doing this, we will get the relation A is equal to minus u naught c square x by m. Now compare this with the standard relation or condition of SHM, that is nothing but the A is equal to minus omega square x. You will get the value of omega. Dot. चलो अब हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग के केस की चर्चा करेंगे। स्प्रिंग पेंडुलम बोल सकते हैं उसको। तो स्प्रिंग पेंडुलम पर एनएलएफ में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस इन जनरली। One is a series combination
we have a fill spring of different spring constants. So spring constant we also, you can use word force constant or stiffness constants, K1, K2, K3. So this is your mg. So we can see if net force on each spring is same, if net force on each spring is same, combination will be series. So you can see if mg we are applying here by attaching a block of mass m, then net downward force will be mg and this downward force will act on each spring. So displacement might be different if we have a different stiffness constant or spring constant or force constant, but force would be remain same. So if you do not go for searching this kind of combination, you just, if you have a question, you just go to the question and try to find whether it has a force same or different. If force are same, then the combination would be series. If force are different, then the combination would be parallel or could be parallel actually. If force are different and but displacement are same, then the combination would be parallel. So this is series combination. Now we will go for the parallel combination simultaneously. So in case of parallel combinations, suppose we have a three different spring of different spring constant and they are attached with the same mass. Suppose the spring constant K1, K2, K3. So net force would be mg. But here the force will be F1, here the force will be F2, here the force will be F3. But we can see the extension or compression would be remain same in all the three springs. Point is clear or not? So net force, total net force is mg, but on K1 force will be F1, on K2 force will be F2 and on K3 force will be F3. So just keep one thing in your mind that if displacement is same, then combination would be parallel. Do not go for searching this kind of combination. You just see if displacement in all springs are same, either by compression or by extension, the combination would be parallel. And if it is a different but force is the same, then the combination would be series. How you will find the equivalent stiffness constant or the force constant or spring constant for both the cases? Just you need to use the common sense. So see, in first case, if we have a three spring of a stiffness constant K1, K2, K3, we know that net force on each spring is same. So let's assume that extension or compression, in this case, there will be extension. So if extension in K1 is x1, extension in K2 is x2, and extension is K2, K3 is x3. And total extension would be x is equal to x1 plus x2 plus x3. What is clear or not? So if we replace these three springs with a single spring having spring constant K equivalent, then we know that relation F is equal to minus of Kx. Got it? So force would be remain same in all the three springs as mg is acting downward and it is directly attached with all the three combination. So x can be written as, suppose if you are replacing the equivalent stiffness constant. So this is what your m, so mg, and the equivalent is k equivalent. What is clear or not? So now we can write as k is equal to minus f by x. So x can be written as mg by, net force is mg, net force is mg, so mg by k equivalent. In case of x1, net force is mg. So we can write as x1 is equal to again f by k. So what is f in this case? Mg. And what is the stiffness constant? K1. So this is minus mg by k1 minus mg by k2 minus mg by k3. So we can cancel out. So k equivalent is equal to 1 by k1, 1 by k2, 1 by k3.
So we can say that the equivalent stiffness constant or equivalent force constant or equivalent spring constant for the series combination would be same as it was in the capacitance. Point is clear or not? Or we can say it is a reverse of resistor. Now we'll go for the parallel combination. So see, so in the case of parallel combinations, we have a K1, K2, K3. In this case, extension would be same. So what would be different? Force would be different. So what we can write, F1 plus F2 plus F3 is equal to F. So net force is equal to sum of all the three forces. So F1 is equal to K1 and displacement would be same. Minus K2x minus K3x, and here it will be K equivalent x with the sign negative. So we will replace this parallel combination with the single spring. So again we will write this M and this would be the K equivalent. So downward force will be mg. So now x will be cancelled out. So we can write as K equivalent is equal to K1 K2 plus K3. So if you are solving problem and there is a combination of a spring, so you can use, if it is a series combination, we use 1 by K equivalent is equal to 1 by K1 plus 1 by K2 dot so on 1 by K3. For parallel combination, we use K1 K2 plus K3. Now we need to find the time period for the spring. So time period for the spring is nothing but T is equal to 2 by under root M upon K. So this is the time period for the spring. अब इसको अगर आपको निकालना है, डायरेक्ट करना है, तो आप कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसको हमने x डिस्प्लेस किया, तो x डिस्प्लेस करके ये वाली सिचुएशन में लेके आए, ये x डिस्प्लेसमेंट आया, तो इसमें जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ kx, F is equal to minus of kx. So acceleration would be minus kx by m, and we know that condition of acceleration is minus omega square x. So omega square is equal to k by m. So time period is equal to 2 by under root m by k. So without नोट कर लीजिए, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नोट लिखिए, लेंथ ऑफ स्प्रिंग एंड इट्स प्रोडक्ट, इसके पहले लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्प्रिंग एंड इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट विल ऑलवेज कांस्टेंट. जैसे अगर हम किसी भी स्प्रिंग के लिए बात करें तो उसका K into L हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट. सो
K into L will be constant. तो अगर आपने एक स्प्रिंग लिया, एक क्वेश्चन कर जैसे अगर करना हो, हमारे पास एक L लेंथ की स्प्रिंग थी, 6L लेंथ की, जैसे क्वेश्चन ले लिया, 6L लेंथ की एक स्प्रिंग है, इसको हमने 1:2:3 के रेशियो में कट कर दिया. Then find the ratio of spring constants of different pieces. Find the ratio of spring constant of different pieces. So we have a spring of length 6L and we have cut into 3 pieces. And the ratio of their length is 1:2:3. Then find the ratio of their spring constant. Find the ratio of their spring constant. जेम्स हो गया क्या भाई? कांस्टेंट अगर ये 1:2:3 के रेशियो में है तो आपके 3 स्प्रिंग जो होंगे, एक की लेंथ L होगी, दूसरी की लेंथ 2L होगी और तीसरी की लेंथ 3L होगी. ठीक है, टोटल लेंथ ही आपको 6L दिया है, तो 1:2:3 का तो यही रेशियो होगा. अब हमें निकालना है क्या भैया, ये कांस्टेंट. तो हमारे पास K1 L1 = K2 L2 ये रिलेशन है. कहाँ से K × L = कांस्टेंट. तो एलएलएम में मैंने बताया था, मुझे याद है और दोबारा मैं सब बता रहा हूँ. ठीक है ना, 11th क्लास पूछोगे तो बता देंगे. अब इधर आते हैं K1 L1 = K2 L2. K1 क्या है आपका, K1 क्या है, K1 is K और L1 क्या है 6L और K2 क्या है निकालना है और L2 पहले ले लो L, L L कैंसिल, तो K2 कितना है आपका 6K. K2 क्या आ गया आपका 6K. कोई दिक्कत आपको नहीं.
अब आता है दूसरे में k इंटू 6l k, इसको हमने k2 मतलब इसको चाहो तो k1 कर दो, अब ठीक है भैया हम इसको ले ले रहे हैं। तो इसका क्या हो गया आपका 6l। अब देखो k इंटू 6l, k2 क्या हो गया आपका, लेंथ हमने लिया है 2l, l कैंसिल, तो k2 क्या हो गया 3k, k2 क्या हो गया 3k। अब हमारा आते हैं अगले वाले में k इंटू 6l, और अभी फिर k, इस वाले में लेंथ कितनी है 3l, तो ये 3l हो गया, l कैंसिल, तो k2 कितना हो गया 2k। तो अब हमारा क्या आ गया, इसका आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट 6k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3k, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द टाइम पीरियड, find the time period, find the time period of the following, find the time period of the following. पहला क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, करो टाइम पीरियड निकालो। अमिता थोड़ा ग्रीन दीजिए।
आ गया? पहला क्या है? एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी नाइस। सेकंड क्या है तुम्हारा? सेकंड किसने किया? हाँ बताओ बेटा। एक्सीलेंट, वेरी नाइस, बढ़िया कर रही है। बाकी तो चेक नहीं कर पाया, चालू कर दिया। तो वहां सेकंड आया, ब्रिलियंट। चलो देखो बेटा, पकड़ो इसको पहले, वेरी नाइस। अब देखो बेटा इधर, बच्चों देखो इधर, ये पहले हम चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन। अगर मान लो इधर फोर्स लगाओगी, पहले कंसेप्ट तो समझो, रट्टा नहीं मारना है, वो ना चाहिए नहीं हो तो गया, लेकिन जब समझो ना, खाली उसके अलावा हम चार चीजें बताएंगे। K1 K2 जैसे है बेटा, आपने क्या किया, इसको आपने इसको फोर्स लगा के खींचा, तो जब आप फोर्स लगा के खींचोगे तो जो फोर्स K1 वाले स्प्रिंग पे लग रहा है वही K2 पे लग रहा है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? सीरीज। कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? सीरीज। सीरीज के लिए इक्विवेलेंट क्या बताया बच्चों? 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। समझ में आया बेटा? समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है, चलो बेटा अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ये हुआ बेटा। अब इसका टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। तो टाइम पीरियड हो गया 2 m by k इक्विवेलेंट, t is equal to 2 under root m by k इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेना 2 under root m by, तो उसने बताया बच्चे ने k1 k2 ऊपर से आ जाएगा k1 प्लस k2। आगे कि नहीं आ गया? कितने लोग आए? ये यहाँ से हमारा आ जाता है। ठीक है, अब आ जाओ इधर, ये वाले में थोड़ा सा लोग डर जाते हैं, पर इसमें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, अगर आप इसको इधर खींचते हो, अगर आप इधर खींचते हो तो ये कंप्रेशन x होगा, तो अगर इसमें कंप्रेशन x होगा तो इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ? x। तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों में सेम हो गया। अगर आप इधर दबाते हो तो इसमें अगर कंप्रेशन x हुआ तो इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ बेटा? x। तो हमने क्या बोला था, x की वैल्यू सेम हो, फोटो कैसा भी हो, x की वैल्यू सेम हो, फोटो कैसा भी हो, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल। कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ ये? पैरेलल। तो यहाँ पे बेटा k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? k1 प्लस k2। यही होगा कि नहीं होगा? सो k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 2 under root m by k1 प्लस k2। ठीक है, ठीक है। अब बेटा आता है सेकेंड वाला। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन किसमें? पैरेलल में। तो पैरेलल का सीधा क्या होगा? 2k प्लस k 3k। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 under root m by 3k। अब इसमें आ जाओ बेटा, ये 2k किसमें हुए? सीरीज में। तो 2k का इक्विवेलेंट k, फिर k किसमें हो गए? पैरेलल में। तो k प्लस k 2k। तो आंसर क्या हो गया? t is equal to 2 under root m by k। नोट कर लीजिए 2k। वो समझा सलोनी? ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना? अब फटाक से शीट निकालो और सॉल्व करो इसको। तो कितने बजे आती हो बेशरम?